Hi all, can you hear me? Can you see me, guys? Can you all hear me? Can you all see me? Can you all confirm, guys, if I'm audible and visible? Can you all hear me, guys? Can you all see me? Let me get the confirmation. Okay, yes, we're live. Hi all, hi everyone, good to have you guys, good to see you, Hi Aaron, hi Abhishek, hi Lokeshwar, and hi Manoj. Hi Abhinav Kumar, hi Abhinav, Abhishek Sinha. Hi Manoj, how are you? Good to have you guys, good to have you. So I welcome you all to this amazing session, right? So wherein we'll be analyzing what happened in IOQM. We'll be analyzing what is coming next. We'll also be doing what if you're not able to clear IOQM this time. So what next? What VOS, what Vedantu Olympiad School has in store with you, right? So guys, देखो. So दो types की cutoff होंगी, ठीक है? Let me clear this for once and all. दो types की cutoffs होंगी. One is to get the certificate. So certificate वाला जो cutoff होगा ना, that will be most likely the same cutoff as your region's last year cutoff. So guys who are from Assam, I think Assam last year cutoff was around 5, 6. So 5, 6, 7, maximum 7 तक चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा. So if you're scoring 10, 12 in a state like Assam, I think you are in for good news that you'll be getting a certificate, right? And right, so अपने region की last year की cutoff check करो बच्चों, right? And जो cutoff थी mostly cutoff will be the same. As far as the cutoff for writing INMO is concerned, I think my personal view is that it should be in the late 30s region, 38 to 42. It should be. So it should be between where between 38 and 42. So for INMO, it should be anywhere between 38 and 42. So if you are scoring anywhere between 38 and 42, I think you have a great chance to qualify or to write INMO exam, right? Chalo. So on that note, let us start this session, guys. I'll be answering many of your questions that you will be putting, right? So एक बार start करते हैं, माहौल बनाते हैं, then I'll be answering all your doubts. So guys, those who do not know me, I'm Abhay Mahajan. I'm a passer of IIT Roorkee. I've worked in a software company called Oracle for 1 year. I left the job and I've been teaching since 11 years now for IITJ, for Olympiads, for many other competitive examinations. I've been lucky to have produced some wonderful ranks in IITJ, and I'm here to help you clear all your doubts about IOQM and INMO and इस साल क्या होगा, right? So guys, don't worry. So guys, first of all, let me congratulate each and every one of you who wrote that exam. Guys, believe me, that is the exam that you wrote on 17th of January. This is one of the toughest exam you will ever face in your life. The exam, अगर हम difficulty wise देखें, that exam is more difficult than JEE Advanced. So उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, because this has no curriculum, no fixed syllabi, no fixed curriculum, and कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, and वो अगर हमारे अंदर courage है just to go there and write that exam, I think we are all winners, right? So on that note, let us start by let us take a moment to praise what happened yesterday, guys. ठीक है? So 17th of January को हमारा एग्जाम था, and the next day this is what India did. ठीक है? So they did the impossible. And this is the latest ranking of India as far as Test cricket is concerned. India is back on top. And guys, ये slide मैंने इसलिए रखी है because we need to replicate this performance in international Olympiads. So India has always been doing great. This is something which we need to replicate in international Olympiads also. We all want to see this country, this flag, right on the top of the charts as far as international Olympiads is concerned, and that is why Vedantu Olympiad School was born. इसका जो सबसे primary aim था, that was to see India here at the top, जहाँ पर वो क्रिकेट पे है, वहाँ पर हम अपने देश को Olympiads में भी देखना चाहते हैं. I hope you also want to see that, right? Can you all write yes? If you want to see India right at the top, the place where it stands in cricket right now,
the place where it stands in cricket right now, do you all want to see India topping the charts in international Olympiads also? Right? So बच्चों उसी का मुहिम है, उसी का नतीजा that we are all doing very fine job. हम तुम मिला के सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and we will be identifying some good students. Hopefully अगले साल हो सकता है वो तुम हो, and we will all want to see and we want to bring gold for India like those boys yesterday who did the impossible for India. बच्चों ठीक है, no one could believe that India could win that test. No one could believe that India, with that team, with those sort of injuries, with the captain, the main captain moving out, Virat Kohli was not there, most of the players were injured, almost four debutants, players like Washington Sundar, players like Shardul Thakur, Gill, Shubman Gill, players like Rishabh Pant, all youngsters. So बच्चों यही चीज तुमसे भी expected है. Everything was around, everything was against them. Sab log, everyone was against them. No one could believe that India could win, that team of India could win that test match, and probably when on the last day when everything was against them and they just did the impossible. ऐसा ही बच्चों हमारी लाइफ में भी होता है. There will be people around us जो हमें बिल्कुल पूरी तरह नकार देंगे, पूरी तरह बोलेंगे कि तुम किसी काम के नहीं हो, and we have to prove ourselves not with the mouth but with the results, और हम ये सब करके दिखाएंगे. Yes, जब पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट होगी हम उठेंगे जैसा कि इन लोगों ने उठ के दिखाया है. Right? So let me just show you. This is something which I showed in the other channel as well. This is what the great cricket pundits, the great players of all times of the cricket era said about Indian team. Let us read the comments, some of the comments. So Michael Vaughan wrote, told ya India are going to get hammered in the test series, Australia versus India 4-0. So this was his prediction for the test series after India lost the first match. I thought their only opportunity to win the test match was at Adelaide, which was the first test which they lost. I don't think they'll be able to turn it around. This is the great Brad Hedden. The great Mark Waugh, I just can't see how India can bounce back after Australia whitewashed them on the third day, 4-0 to Australia. This is what Mark Waugh wrote about Team India. Ricky Ponting, the great Ricky Ponting, there could be a good chance of a whitewash. While Kohli not being there, there is almost no one to pick them up after the loss like that. And the great Michael Clark, what he said, can you imagine this Indian batting lineup without Virat Kohli for the next two matches? They're in deep trouble after the first loss. This is what the cricket pundits wrote for India. And they did the impossible. This is what I want from each one of you. बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका IOQM में इस साल अच्छा स्कोर नहीं आया होगा. बहुत सारे लोग होंगे उनके आसपास जो बोलेंगे मैंने तुझे पहले ही बोला था. You are not capable of doing that. Do not listen to them. Do not listen to them, because what you attempted but on 17th of January, this was nothing short of a victory. Because एक ऐसा एग्जाम तुम अटेम्प्ट कर रहे थे जिसका कोई सिलेबस नहीं है, जिसका कोई करिकुलम नहीं है, जिसकी कोई स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी नहीं करवाता. हमने शुरू किया था लास्ट टाइम वेदांतु ओलंपियाड स्कूल ने, नॉट ऑन यूट्यूब, ऑब्वियसली यूट्यूब पे हम काफ़ी लेट आए थे, बट हमारे डिफरेंट जो बैचेस स्टार्ट हुए थे लास्ट टाइम, वी स्ट्रक्चर तरीके से हमने तैयारी कर रही थी. एंड अगेन वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द स्टूडेंट्स एंड आस्किंग देम अबाउट द मार्क्स, एंड वी आर गेटिंग सम वंडरफुल रिजल्ट्स बच्चों आउट ऑफ दोस. We are seeing some wonderful results out of those calling, and again, believe me, we are going to rock this time in Olympiads. And also, what is in the store for you? I'll be discussing it today. But before that, this is a tweet of Sachin Tendulkar, the great Sachin Tendulkar, just 1 hour back. So this is what he wrote. For all of us in India and across the world, if you ever scored 36 or lesser in life, if you ever score, this is not the IOQM he is talking about. So 36 was India's score in the first test match with India lost. See what is writing and see कि कहाँ पर हमें कैसे हम relate कर पा रहे हैं इसको IOQM के साथ. If you ever score 36 or less in life, just remember it isn't the end of the world. It isn't the end of the world. The spring stretches backwards only to propel you forward.
And once you succeed, don't forget to celebrate with those who stood by you when the world wrote you off. बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों, इस साल IOQM का एग्जाम अच्छा नहीं होगा. बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन अच्छा किया होगा, but इस साल they might not have done as well as they wanted to. Do not write them off. There's always a next chance. The good part about IOQM is it happens every year. It happens every year. Let us be that spring. Let us be that spring which will move forward once it is backward. So अगर हम इस टाइम पे backward पे हैं और हमें लगता है कि हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, let us be that spring and let us move forward and let us show the world what we are actually capable of. और ये हो सकता है, और ये हो सकता है, हम सब कर सकते हैं. Everyone can do it. Everyone has inside us that little spark. बस उस spark को जलाने की जरूरत है बच्चों, उस spark को जलाने की जरूरत है. और जैसे ही वो spark जलेगी, we will be that spring. We will be that spring. So this is what the great Sachins Tendulkar wrote. This is what the great Sachin Tendulkar wrote, right? So if you have scored less marks in IOQM, do not lose heart. Do not lose heart. The fact that you appeared for that exam on 17th of January, which has no defined curriculum, which has no defined syllabi, this makes you a winner already. This makes you a winner already. Do not lose heart. We'll come back stronger and harder and we'll crack IOQM next time. कैसे करना है आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है, अगले साल का स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है और अभी हम क्या करने वाले हैं, right? So do not lose heart. So this is what I wanted to tell you, right? So let us appreciate what Team India did and let us be like Team India and जैसा इंडिया का रैंकिंग है टेस्ट क्रिकेट में, वैसा ही हम चाहते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में. And this is possible बच्चों. In 2 years time I want to see India right at the top of all the other nations who are doing well in Math Olympiad, like Japan, like Korea, like China, like USA, like Germany, and इन सबसे ऊपर देखना चाहते हैं. एंड हो सकता है कि तुम में से जो इस लेक्चर को एक्चुअली देख रहे हो, तुम में से वो बच्चे हो सकते हैं जो इंडिया को एक्चुअली रिप्रेजेंट करें एंड इंडिया यहाँ पर है. यू कैन बी दैट शुभमन गिल, यू कैन बी दैट शार्दुल ठाकुर, यू कैन बी दैट वाशिंगटन सुंदर गाइस. ठीक है. सो डू नॉट राइट योरसेल्फ ऑफ, राइट? सो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विद IOQM 2021 एनालिसिस. ये एनालिसिस हमने उस दिन भी किया था एंड वो एग्जैक्टली सेम एनालिसिस है एंड इससे मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है. उस दिन भी मैंने बताया था दिस इज हाउ द पेपर केम बच्चों. सो पेपर को अगर हम हल्का सा एनालिसिस करें इस साल के पेपर का, सो ज्योमेट्री वाज द हेवीएस्ट. सो देयर वर ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस व्हिच केम आउट ऑफ 30 फ्रॉम ज्योमेट्री. सो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, अलजेब्रा के 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 5 क्वेश्चन के 1 मार्क एंड सो ऑन. सो वी नो कि अगले साल जो लोग अगले साल हम तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अगले साल के पेपर को टारगेट कर रहे हैं, वी नो what all chapters to be done first, right? So we need to put a lot of effort in geometry, in number theory, in combinatorics, in algebra as well. So अगर ये चारों चीज में से कम 3, at least 3 अगर हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं, I think we are done. क्या करना है बच्चों? So there are a couple of books for the students who are in class 8, 9th and 10th, who will be in class 8, 9, 10th in the next year. अगले साल जो स्टूडेंट्स क्लास 8, 9th और 10th के अंदर जाएंगे, I want each and every one of you to start this book called Pre-College Mathematics. Pre-College Maths. And there's a book called David Burton for number theory. For number theory is a book called David Burton. And Pre-College Mathematics is the known book for geometry, basic geometry. तो काफी improve कर देगी, plus obviously number theory plus algebra.
इसके अंदर वैसे सब कुछ ही है, बट इसका ज्योमेट्री अगर तुम ध्यान से एक एक क्वेश्चन कर लेते हो, आई थिंक यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन ज्योमेट्री. सो ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 8, 9th and 10th who will be in class 8, 9 and 10 the next year, this is what we would want you to do. ठीक है. सो ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग विद द कोर्सेज द नेक्स्ट ईयर. अप्रैल से हम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि हम कौन कौन से कोर्सेज अगले साल स्टार्ट करने वाले हैं 8th, 9th, 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए. एंड तब तक जगह टाइम है तुम्हारे पास. इफ यू नो योर if you are really looking forward to crack IOQM or pre-RMO or RMO next year, this is what you need to start doing right away. अभी से शुरू कर दो, so that when you are actually next into your school curriculum next year, तुम्हारा already सब कुछ space, time और बाकी चीजें set हों, right? चलो, so this was it. This is the number of questions per chapter बच्चों. So let us look at the number of questions per chapter. Geometry, 10 questions out of 30, so 1/3. 10 questions out of 30, so 1/3 were the questions from geometry. Algebra 4 questions, number theory 7 questions, combinatorics 5 questions from combinatorics, inequality 2 and sequence series. दोनों के दोनों जो questions आए थे sequence series के, दोनों के दोनों telescoping से आए थे. So sequence series के जो दोनों questions आए थे बच्चों, they were from telescoping. And if you remember, we discussed telescoping series. We discussed telescoping series in one of our IOQM series, and I hope जिन्होंने वो attend किया होगा lecture, काफी important रहा होगा वो chapter, and उससे जरूर help मिली होगी. So we can have a look at the importance of geometry बच्चों. ये तो अच्छा होना ही चाहिए. ये तो अच्छा होना ही चाहिए बच्चों. Geometry, number theory, these are the two important lectures, chapters which should all be very good at. We should all be very good at. Number theory, geometry. Number theory, geometry. Note कर लो, because इनके बिना will not be able to qualify. Even if we are able to qualify IOQM, will not be able to qualify RMO. Even if we are able to qualify RMO, will not be able to write INMO without geometry and without number theory. Very important, these two lectures, right? These two chapters. All right, so marks distribution. So geometry, 33 marks. 33 marks geometry बच्चों. 33 marks geometry out of 100. 1/3. So imagine, जिसका geometry बहुत strong है, 33 में से कितना स्कोर कर सकता है. जिसका geometry weak है, तो 33 तो गए भाई. उसका तो पेपर ही out of 66, 67 हो रहा है. जिसका ज्योमेट्री वीक है, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के छोड़ दिए, उसका तो पेपर ही 67 में से हो रहा है, 100 में से हो ही नहीं, राइट? सो ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी अगेन 22 मार्क्स नंबर थ्योरी, 18 मार्क्स और 19 मार्क्स फ्रॉम अलजेब्रा. कॉम्बी नॉट 18, 14 फ्रॉम हेयर, 19 फ्रॉम हेयर एंड सो ऑन. तो देख रहे हो. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो वी नो कौन से चैप्टर्स, कौन से चीजें करनी है. बच्चों आज हम बहुत इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ. आई नो बहुत सारे सवाल हैं तुम लोगों के. आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स. प्लीज पहले सुन लो. हो सकता है कि मेरी स्लाइड से जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ तुम्हें, उससे तुम्हारे काफी डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाए, राइट? सो लेट अस गो फॉरवर्ड. सो IOQM इज ओवर. व्हाट इज नेक्स्ट? नाउ व्हाट? अब बच्चे यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे हैं. यहाँ पे इनफैक्ट 3 तरीके के बच्चे हैं. So what is? So type 1 kids who are not getting the certificates. They worked hard, or they might not have worked hard, but they gave the exam did not get well, और इतना अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, and they're not getting the certificates. Type 2, सर्टिफिकेट तो पक्का है, but will not be able to write INMO. And type 3 will write INMO. So these are the 3 category of people इस एग्जाम के बाद जो पैदा हुई होगी, right? So अपने लोग there will be some जो बॉर्डर पे होंगे, there will be some जो बॉर्डर पे होंगे, right? So let us categorize them, right? अब इन सब के लिए क्या है? For those who are not getting the certificate and for those who are getting the certificate, I've already told, if you are from class 8th, 9th and 10th, start preparing right away yourself. Start preparing. Obviously, we'll be helping you. Vedantu will be helping you. Vedantu Olympiad School will be helping you.
तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे. कैसे करना है? PCM प्री कॉलेज मैथमेटिक्स का एक बुक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योमेट्री. हम इनफैक्ट जो अपने बच्चे साथ भी अपने कोर्सेज के अंदर हमारे पास बच्चे थे जो इस साल भी, उनको भी हमने प्री कॉलेज मैथमेटिक्स रेकमेंड किया था. तो इफ़ यू स्टार्ट रेकमेंड डूइंग प्री कॉलेज मैथमेटिक्स फ्रॉम डे वन, अभी से स्टार्ट कर दो, यू विल बी वेरी अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स. एंड इफ यू वांट टू बी गुड एट नंबर थ्योरी, देयर इज अ बुक कॉल्ड डेविड बर्टन. You can start David Burton and pre-college mathematics. Geometry you can start and again pre-college mathematics consists of all the chapters, but इसका geometry काफ़ी अच्छा है. बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करते हैं and ये geometry अगर तुम स्टार्ट कर देते हो, अगर तुम 8th 9th और 10th में हो बच्चे, then you will be very ahead of your peers next year, let me tell you, right? चलिए अब क्या है. तो सबसे पहले तो for those students who wrote IOQM, this is what we are starting from tomorrow. This is what we are starting from tomorrow. So this is the INMO Camp. This is the All India INMO Camp for all the students who wrote in IOQM. So बच्चों, हो सकता है कि तुमने इस साल you will not be able to qualify to write INMO, but again फिर भी अगर तुमने IOQM का एग्जाम लिखा है, I would advise each and every one of you to attend this camp. I would advise each and every one of you to attend this camp because ये camp तुम्हें अगले साल के लिए भी prepare करेगा. So next year you'll get prepared for this camp because होता क्या है, once we starting with the pre-RMO preparation. pre-RMO अगस्त में होता है. अगस्त और अक्टूबर में जब RMO होता है वो टाइम बहुत कम होता है. अक्टूबर का जब रिजल्ट आता है नवंबर के अंदर और जनवरी में INMO होता है, उसमें भी टाइम बहुत कम होता है. So if we have started preparing early, हमें पता लग जाए कि यार INMO की तैयारी करनी कैसे होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि बीच में हम प्री RMO के साथ साथ INMO में और RMO में कंसंट्रेट कर सकें. राइट. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू गाइज. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू register yourself. So if you've appeared for IOQM this year, this camp is starting from tomorrow. This is free of cost for all the students who wrote IOQM. So this is for the first time Vedantu Olympiad School is inviting all the students who wrote IOQM for this important camp. So there will be 10 lectures back to back, 2 hours each every day for 10 days continuously, and we'll be preparing students topic wise. हम start करने वाले हैं preparation INMO की, and I want each and every one of you to be a part of this camp, whether or not you're clearing or qualifying for writing INMO or not. This camp will be a great experience for each and every one of you, right? So this is one thing. क्या करना है इसके लिए बच्चे? So there are 2 links given to you. So these are 2 links which are given to you. So first is this link. This is for the registration. So those who have not registered, I know बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा एंड बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी कॉल्स आ चुके होंगे. बहुत सारे बच्चों अभी भी पूछ रहे हैं एंड कॉल्स अभी तक नहीं आई होंगे बिकॉज बच्चे हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट थी एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कॉलिंग. तो अगर तुमने लेट रजिस्ट्रेशन भरा है, 3-4 दिन के बाद भरा है, दूसरे दिन भरा है, तीसरा दिन भरा है, तो अभी आज के दिन या मैक्सिमम कल दोपहर तक तुम्हें कॉल आ जाएगा. एंड डोंट वरी, तुम्हें डेफिनेटली कॉल आएगा बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं, इनको रजिस्टर कर लिया गया है. सो दिस इज द एंड अगर तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा अभी तक, आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रजिस्टर राइट अवे सो दैट वी कैन गिव यू अ कॉल. एंड the only criteria is you have to appear. You should have appeared for IOQM exam. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे अलग से मेल्स कर रहे हैं, अलग से मैसेजेस कर रहे हैं मुझे दैट सर इस बार IOQM का एग्जाम तो नहीं दिया बट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कैंप. सो बच्चों, विद अ वेरी हेवी हार्ट आई हैव टू से सॉरी बिकॉज देयर आर लिमिटेड सीट्स. तो हम वो चांस ऑब्वियसली उन्हीं को देना चाहते हैं जो IOQM में इस साल अपेयर हुए. ठीक है. सो आई डोंट जनरली से नो बट दिस इज वन रिस्ट्रिक्शन जो हमने ऑलरेडी लगाई हुई है एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. The second is, बच्चों, this is the INMO booklet. The INMO booklet which you can download for free of cost. Free of cost you can download for INMO booklet. So vdnt.in/vinmo21. So this is a specially curated booklet of 63 pages wherein we've written all the formula which जो कि INMO के लिए useful होंगे, and also we've given 3 sample papers. So 3 sample papers. INMO type के, and out of which for INMO, out of which one is completely solved.
एक सैम्पल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व है, पूरा का पूरा सॉल्व है. यू कैन डाउनलोड दिस फॉर फ्री फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड यू कीप इट विद यू. अगर तुम इफ यू आर नॉट विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंप, ये तुम्हारी काफी हेल्प करने वाला है, राइट? अगले साल भी ये काफी हेल्प करेगा. सो दिस इज वन थिंग दैट वी वांट टू ऑफर यू एज अ टोकन ऑफ थैंक्स फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो वेदांतु ओलंपियाड स्कूल्स चैनल. जितना अच्छा पार्टिसिपेट किया था और जितना अच्छा तुमने अच्छा रिजल्ट दिखाया है, तो दिस इज आवर गिफ्ट फॉर यू गाइस, राइट? नेक्स्ट ईयर बैचेस बच्चों, अगले साल के बैचेस मैं आज पहली बार अनाउंस करने वाला हूं. आई एम अनाउंसिंग नेक्स्ट ईयर बैचेस. तो दिस ईयर बैचेस ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं. ओनली वन इनमो बैच इज पेंडिंग, जिसमें हम ऑब्वियसली बच्चों को इनमो की तैयारी करवा रहे हैं, जो स्टार्टिंग से बना था फॉर दो स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड आरएमओ लास्ट ईयर. सो बच्चों ध्यान से सुनना कि अगले साल के बैचेस क्या होने वाले हैं. सो देयर आर 5 बैचेस दैट वी आर लॉन्चिंग द नेक्स्ट ईयर. 5 बैचेस we are launching the next year. This is the first time I am making this announcement on public platform. So first batch is for pre-RMO class 8 students. Those students who will be in class 8 the next year. अगले साल, जो अभी क्लास 7th में है, अगले साल होपफुली क्लास 8 में आ जाएंगे. That is the batch for pre-RMO class 8 starting from April. So pre-RMO for the students who are in class 8, who will be in class 8 the next time, the batch is starting from April. Second batch is for pre-RMO class 9th and 10th students. Obviously हमने 9th और 10th students को क्लब कर दिया because we know that syllabi almost same होता है and हम बेसिक से तैयारी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे. सो ऐसा नहीं है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल होने वाली है. It will be same. So same syllabi will be starting from the basics. 10th भी कवर करेंगे, 9th भी कवर करेंगे and obviously उनको ऊपर लेके जाएंगे. So this is another batch, separate batch for the students who will be in class 9th and class 10th the next year. So combined batch for them. Again starting from April. The third batch is for the class students who are in class 11th and 12th. So 11th और 12th में बच्चों एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम होती है. The problem is most of the students are focusing on IIT JEE /NEET. तो बहुत सारे बच्चे IIT JEE और NEET के अंदर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. तो एक सेपरेट बैच है which will be oriented only for problem solving. तो उसके अंदर हम थ्योरी पहले से ही दे देंगे. थ्योरी वो बच्चे की चॉइस होगी. हम बता रहा हूँ भाई कैसे अप्लाई करना है. I'll tell. इस स्लाइड के बाद कैसे अप्लाई करना है, I'll also tell that. तो 11th and 12th के बच्चे जनरली दे आर फोकस्ड ऑन IIT JEE and NEET. ठीक है. सो दिस इज अ बैच स्पेशली क्यूरेटेड फॉर 11th and 12th स्टूडेंट्स, wherein we will be solving only and only class examples, and also for the students who were with us this year. जो हमारे रेगुलर बैचेस में थे, pre-RMO 8 में 9th में एक बार तुमने कोर्स कर लिया, अगले साल सेम चीज थोड़ा करोगे. So there has to be something different, right? So for all the students who were with us this year in our regular batches this year, not on YouTube, we're talking about the regular batches. Regular batches this year, old students के लिए हम ये बैच लॉन्च करने वाले हैं. इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों, ओल्ड बच्चों को तो जल्दी मिलने वाली है. हमारे टीम जल्दी से कॉल करेगी एंड दे विल बी रजिस्टरिंग यू इनटू दिस बैच, right? So 11th and 12th and old students, this will be batch will be focusing only on problem solving. सिर्फ हम problem solve करेंगे topic wise, of course. We'll be doing topic wise problem solving on this. यहाँ पर थ्योरी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो दैट इज वाई इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होगा. इट विल बी 2 days a week. इन दोनों का 3 days a week रहेगा, राइट? द फोर्थ बैच इज RMO बैच. सो RMO बैच इज फॉर दो स्टूडेंट्स who will be getting certificates and greater than 25 marks. ठीक है. सर्टिफिकेट्स अगर इनके पास होंगे, जो इस साल सर्टिफिकेट मिलेंगे जिनको, एंड अगर उनके 25 मार्क्स से ज्यादा हैं, सर्टिफिकेट के बाद ऐसा भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट 10 नंबर पे मिल जाए किन्हीं स्टेट्स में, बट उनके ऑब्वियसली थोड़ा सा और प्रिपरेशन करवाना पड़ेगा. बट अगर सर्टिफिकेट है और 25 नंबर से ज्यादा है, विल बी कीपिंग देम इन RMO बैच एंड सीधा उनकी RMO की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. ऑब्वियसली व्हेन से RMO तो pre-RMO तो चलेगा ही चलेगा, इनके साथ RMO के पे फोकस रहेगा. इट विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स RMO. एंड फॉर द फिफ्थ बैच is for those students who will write INMO this year. So those who will write INMO this year will be launching B5 fifth batch, only focusing on INMO. So these are the 5 batches that we are launching the next year, and this is the first time I am announcing this on the public platform. And सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया, बच्चों मैंने सबसे पहले YouTube पे अनाउंस किया है, taking the permission of the authorities. Right, so these are the batches for the next year, and I want each and every one of you to be a part of these batches. Right.
डिफरेंस बिटवीन IOQM एंड प्री आरएमओ विजया, तो नॉर्मली प्री आरएमओ ही होता है। इस साल प्री आरएमओ का नाम बिकॉज ऑफ पेंडेमिक IOQM हो गया था, आरएमओ का स्टेज हट गया था, तो इस बार नाम चेंज कर दिया गया था, पैटर्न सेम रहता है। सो नॉर्मली जो पैटर्न होता है दैट इज प्री आरएमओ, उसके बाद आरएमओ, उसके बाद इनमो, एंड इसके बाद ट्रेनिंग कैंप, एंड इसके बाद IMO। सो दिस इज व्हाट द पैटर्न इज। यहां से यहां पर अराउंड 13,000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं यूजुअली। 13,000 स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम प्री आरएमओ स्टेज टू आरएमओ टू राइट आरएमओ। यहां से यहां अराउंड 1400 स्टूडेंट्स, यहां से यहां 35 स्टूडेंट्स, एंड यहां से 6 स्टूडेंट्स, 6 लकी वंस from the whole of India get the chance to represent India at international level. Rebu, since Vedantu Olympiad School is focusing only on producing toppers, so यहाँ पर the aim of Vedantu Olympiad School wing is to produce toppers. So fees में we do not charge much fees. So last year all the courses were free of cost. Just that we handpick the students. ऐसा नहीं था कि कोई भी student इन courses में आ सकता था। We handpick the students. We used to take the test. अभी भी टेस्ट है, वो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। So test में if you're able to score well and if you're able to clear the interviews, we'll be picking you into these batches, right? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है कि कैसे इन बैचेस के अंदर सर कैसे एंट्री मिलेगी। सो बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दीज टू, सो आरएमओ को ऑब्वियसली इफ यू गिव अस द सर्टिफिकेट और बताते हो कि तुम्हारे 25 मार्क्स से ज्यादा थे और सर्टिफिकेट आया था, तो ऑब्वियसली विल बी डायरेक्टली एनरोल्ड इनटू दोस बैचेस। इनमो में दोस ऑब्वियसली देयर विल बी प्रूफ्स। इन दोनों को छोड़ के जो ये 3 बैचेस हैं बच्चों, दीज आर द 3 बैचेस। इनमें आने के लिए, इसके अंदर आने के लिए यू विल हैव टू गिव दिस टेस्ट कॉल्ड वोल्ट। यू विल हैव टू गिव दिस टेस्ट कॉल्ड वोल्ट। सो वोल्ट इज द टेस्ट जिसका फुल फॉर्म है वेदांतु ओलंपियाड लिटमस टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है वेदांतु ओलंपियाड लिटमस टेस्ट। सो दिस इज द टेस्ट दैट वी स्टार्टेड द लास्ट ईयर। ये टेस्ट हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था बच्चे, लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू। इस साल का अगर तुमने उन बैचेस में जाना है तो ये टेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। एंड वी स्टार्टिंग दिस टेस्ट फ्रॉम 14th of February एवरी संडे। तो स्टार्टिंग February एवरी संडे 14th of Feb से स्टार्ट होगा, हर संडे को ये टेस्ट होगा। क्या होगा? वो उल्टा हो गया भाई, 30 मैथ्स एंड 15 मैथ, उल्टा हो गया इसके अंदर, डोंट वरी। सो देयर विल बी 30 मैथ्स क्वेश्चंस class wise there will be 30 maths questions and there will be 15 questions from math. We'll pick the toppers from this test, we'll give them a call, we'll enroll them into these batches which are almost free. We do not charge much fees for these Olympiad courses because we know that you're all toppers, you've proven themselves yourself. So we do not charge much fees. बहुत कम फीस होती है, it is like 100 rupees or 200 rupees or 300 rupees for the entire season, for the entire year. But you will have to clear this test. You will have to clear this test. अगर तुम ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो, 30 मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, 15 मैथ के क्वेश्चंस होंगे। The test is starting from 14th of February every Sunday. So every Sunday from 14th of February you can give the repetitive test. So if you're not able to do well in one of the tests, you can give it the next time as well. But every Sunday there will be a test. You can participate. There is no cutoff. We take the percentile. We take the top 20 students of every Volt exam. So every Volt exam, we take the top 20 students of every Volt exam. There is no percentage as such. It will be only maths oriented test. Okay? Because obviously the courses are for maths. तो maths ही पूछेंगे, science नहीं पूछेंगे. Science का जो NSCs का Volt होगा वो अलग होगा. हम maths की बात कर रहे हैं. ठीक है? All right, so this is the link बच्चों, this is the link for Volt. You can go to the Vedantu site, वहाँ पर you can search Volt, you'll get the Volt homepage. वहाँ पर जाकर तुम register कर सकते हो। अभी it is not updated as of now. अभी it is not updated, but in 2-3 days it will get updated. And उसमें तुम 14th February का टेस्ट के लिए register कर सकते हो in 1-2 days. In 1 to 2 days it will be updated. अभी वो पिछले साल के दिखा रहा है Volt, but in next 1 to 2 days it will be updated. You can go to this site, you can go to Vedantu's homepage or this particular link and search for Volt in that Vedantu link.
11th और 12th को थ्योरी कैसे पढ़ाएंगे? 11th और 12th को थ्योरी अगर तुमने पढ़नी है तो 9th और 10th के बैचेस में आना पड़ेगा बच्चे। 11th और 12th की थ्योरी हम ऐसे पढ़ाएंगे कि बेसिक थ्योरी जो सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरी है वो तो बच्चों को हम अज्यूम कर रहे हैं कि पता ही होगी, ठीक है। जो नंबर थ्योरी की थ्योरी है ऑब्वियसली वो पढ़ाएंगे, जो नई थ्योरी है। सो व्हेन आई से ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग, अच्छा बच्चों एक थिंग आई थिंक ये कंफ्यूजन है, लेट मी क्लियर दिस ऑफ। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 11th और 12th में अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है तो थ्योरी कैसे पढ़ाएंगे? तो बच्चों व्हेन आई से क्वेश्चन सॉल्विंग आई मीन क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ द टॉपिक्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। सो देयर आर टॉपिक्स लाइक सिमिलर ट्रायंगल, देयर इज अ टॉपिक लाइक दिस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, देयर टॉपिक लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर इनकी थ्योरी नहीं होगी। ऑब्वियसली जो अलग थ्योरी है, ज्योमेट्री की थ्योरी जरूर कराई जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि ज्योमेट्री की थ्योरी तुम लोगों को नहीं पता। तो ऐसी थ्योरी जो तुम्हें 9th और 10th के करिकुलम में नहीं है वो तो पढ़ाई जाएगी, बट 9th और 10th के करिकुलम की जो थ्योरी है वो नहीं, वो स्किप करके उसके सिर्फ क्वेश्चन होंगे। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। येस, द टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, द टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, द टेस्ट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डू नॉट चार्ज एनी फीस फॉर द टेस्ट, right? So this is it, this is the link for the Volt exam and it will get updated in 1 to 2 days guys. It will get updated in 1 to 2 days, 2 दिन के अंदर ये link update हो जाएगा। You can go to this and you can give the test and you can get enrolled into our batches. Now बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हमारा तो INMO clear हो रहा है, I mean we are eligible to write INMO, what is there in store for us on YouTube? So YouTube में it is my privilege to announce that we are starting with a new series called INMO Question of the Day starting tomorrow. कल से बच्चों हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं called INMO Question of the Day. अब देखो INMO का ना, जो INMO का एग्जाम है that is the one of the toughest exams. INMO की अगर हम बात करें 4 hours 6 questions, so you can see the toughness of these exams. 6 questions to be attempted in 4 hours and believe me guys, if you do 2 questions right, 2 या 2.5 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, यू आर थ्रू। 2 या 2.5 क्वेश्चन भी अगर तुम कर लेते हो, यू आर थ्रू। सो दिस इज द टफनेस लेवल। सो ऑब्वियसली INMO इज समथिंग which can't be done live on YouTube. तो तुम्हारे लिए हम स्पेशली क्या कर रहे हैं, वी आर लॉन्चिंग दिस सीरीज कॉल्ड INMO Question of the Day. 1 question every day will be discussing and again question will be premiered. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन को रीड करना है। दोज हु आर क्लियरिंग इन, दोज हु विल बी क्वालिफाइंग टू राइट INMO, तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। यू हैव टू पॉज द वीडियो, सो रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, थिंक फॉर अबाउट 30 minutes, and if you're not able to solve in 30 minutes, then you can resume the video. So this is what you have to do. Read the question every day. There will be 1 question. Every day there will be 1 question. You have to read that question. You have to pause that video. You have to solve. Give at least 30 minutes, and then you can resume if you're not able to answer. Right? So this is what you need to do for this. Right? So INMO is something जो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम मजे देख से मूवी की तरह वो क्वेश्चन को सॉल्व करो, because you have to put in some efforts. That is why it can't be done live. It can't be done live on YouTube. जो थ्योरी है बच्चे INMO की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। थ्योरी हमारे बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स में हम डाल चुके हैं। RMO फ्लैशबैक नाम की सीरीज थी, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन हमने RMO को सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर, उसके अंदर थ्योरी हम बता चुके हैं। साथ साथ कोई नई थ्योरी INMO के लिए नहीं होती। देयर इज नो न्यू थ्योरी फॉर INMO, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और जो भी थ्योरी होगी हम उन क्वेश्चंस के जरिए ही बताएंगे। जो भी हम थ्योरी होगी वो इन क्वेश्चंस के थ्रू ही बताएंगे। कार्तिक, यू मस्ट हैव गिवन वोल्ट लास्ट ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ईयर बैचेस। फॉर नेक्स्ट ईयर यू हैव टू राइट INMO अगेन, यू हैव टू गिव वोल्ट अगेन। You might have given volt last year. I am talking about the next year batches. अगले साल के बैचेस की बात कर रहा हूँ। So अगले साल के बैचेस के लिए तुम्हें दोबारा वोल्ट लिखना पड़ेगा, unless you are one of the students of Vedantu Olympiad School. अगर तुम last year Vedantu Olympiad School के student रहे हो तो automatically you will get enrolled into one of our courses, right? Right? चलो. So this is what I had to announce बच्चों, and thank you for each and everything. Thank you for all the love. Thank you for all the support that you have given us on YouTube and otherwise on platforms. Thank you for such amazing results that you're giving us this year. It is all because of your efforts that हम अच्छा कर रहे हैं, and I hope
with our efforts in the subsequent years, we will do what Team India has done in the past. We will do something miraculous when everyone is write us off. ठीक है, बहुत सारे बच्चे आई एम वेरी श्योर इस साल इनमो में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे होंगे IOQM में जितना वो चाहते होंगे. एंड आई एम वेरी श्योर जैसे कि तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, लेट मी शो यू दैट ट्वीट अगेन. लेट मी शो यू दैट ट्वीट अगेन बच्चों, फ्रॉम द ग्रेट सचिन तेंदुलकर. Let me read this again. So for all of us in India and across the world, if you ever scored 36 or lesser in life, remember, it isn't the end of the world. The spring stretches backwards only to propel you forward. So if you have scored less, that means you are at that point wherein if you get released, you will go forward and forward in life. And once you succeed, don't forget to celebrate with those who stood by you, because you'll have a lot of enemies when the world wrote you off. So stood by you matlab hum matlab ki Vedantu Olympiad School. So I hope with the efforts that we'll be making this year, and when you will succeed, you need to celebrate that success with us next year. All right, on that note, let me say bye to you guys. There are many questions जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे, जो कि हो सकता है कि मैंने मिस आउट कर दिया हो. Guys, if you have any other question, any other query, any sort of question, please write that question after this session gets ended. So जैसे कि session end होगा, please write that question to me, and if I think the question is relevant, I will definitely answer you today only before I go to sleep. I hope I've made myself clear, guys. I hope I've made myself clear. And I hope to see you in the INMO Camp. Don't forget to register yourself in the INMO Camp, and also don't try to forget the exam called Volt. More on that, I'll keep on coming and keep on updating about more stuff about Olympiad School on this very channel. Take care, have fun, bye.